बहुत कम लोगों को पता होगा, शायद मैंने अपने करियर की शुरुआत एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट करी थी। इस दौरान काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बुमराह का मैंने इंटरव्यू किया, डैरन सैमी। बट आज मेरे लिए एक माइलस्टोन है, बिकॉज टुडे आई एम विद वन ऑफ द लिविंग लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, somebody who has given us so many great moments. The great Kapil Dev, the 1983 World Cup winning captain. So first of all, thank you for joining us. आज आपने देखा जिस तरह से एयरटेल ने अपनी ये 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपकी जो वो ग्रेट 175 नॉट आउट इनिंग्स है, जिसकी हमने एज किड्स इतनी कहानियाँ सुनी है, इतने किस्से सुने, उसे रिक्रिएट किया. सो हाउ डज इट फील टू relive all those moments back with the help of this technology? Only I can say I'm happy. I've seen that everything, but a lot of people when I meet they talk about that. I haven't seen that inning. If we can, somehow can see that. And I must say Airtel 5G have done something which we were missing out for so many years. So I like to say thanks to Airtel to creating something like that, or the technology people. सर जैसा आपने कहा ना कि वो इनिंग्स आपने नहीं देखी थी, यू मिस्ड आउट ऑन वाचिंग दैट इनिंग्स बिकॉज यू वर प्लेइंग ऑफ कोर्स, बट आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे स्पोर्टिंग मोमेंट्स होंगे जो आप शायद किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपने मिस कर दिया, कोई ऐसे लेजेंड्स जिन्हें आप कभी खेलते हुए लाइव नहीं देख पाए. तो क्या कोई ऐसे मोमेंट्स हैं जो आप चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से रिक्रिएट किए जा सकें? Yeah, why not? Garry Sobers, all time one of the greatest cricketer and an all-rounder. Love to see him as when he started playing his cricket, or Don Bradman, or Pele, and so many other great, our hockey team of 75 or 60s when they won the Olympics. Those type of players, love to see them. If technology can go back and try to give us something close to that. सर आपने अभी अंदर जब मैं आपको सुन रहा था, आपने एक बात कही थी कि आप उस जनरेशन से आते हैं जब टेक्नोलॉजी थी नहीं, आपने मैदानों में क्रिकेट खेला है, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट बन गया आज की डेट में क्रिकेट में कि एक सेक्शन है जो कहता है कि यार टेक्नोलॉजी जो है ना उस समय काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल डैरन सैमी का मैंने कुछ 2 साल पहले इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझे बताया किस तरह से जो डेटा एनालिस्ट होता है उसको यूज़ करके वो डेटा साइंस को ही मेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज विच एक्चुअली हेल्प. मॉर्गन की लोग बात करते हैं जिस तरह से वो नंबर्स वगैरह यूज़ करते हैं, बट एक सेक्शन ये भी है जो कहता है कि यार क्रिकेट स्ट्रैटेजीज का गेम है, ग्राउंड पे खेलने दो. अगर आप इतनी ज़्यादा कंप्यूटर से चलाओगे तो वो मज़ा ख़त्म हो जाता है. तो आपका इसमें क्या राय है, किस तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइंड हैं? Oh, I don't know today's technology. I can't say nothing about that. I think you have the technology here. Your brain, use them as much as you can. And don't depend on anybody. Yes, if something can help you, why not? We have cars, we have flight. There was a time you want to go to America, it take 3 months to go. Today you go in the morning and next day you are back. So if technology can help you, why not? But don't only depend on that. You have to depend on your brain also.